share my screen. इसको बड़ा करो. Lovely. ये कहाँ भाग गया? Okay. So हमने पहले जो डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी वाज एसेंशियली हमारे पास दो एटम्स है. एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, एंड दूसरे वाले में भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे. इनकी वजह से कुछ फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. नाउ इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, that means that there is a gradient, right? Force is equal to, but charge को 1 मान लो, कोई बात नहीं. So there has to be a potential. Yes, If there is a potential, what does this potential look like? Well, this potential would look like something like, अगर इस point पे potential आपको नापना है तो फिर कितना होगा? K, let's say call it Q1 and Q2, Q1 Q2 by R, whatever the distance between them is. Correct? yes, sir. Now, if you change the distance R, how does this function look like? How does the potential energy look like? Well, first of all, हमको ये दिख रहा है कि zero पे when they are very very close to each other, this potential energy blows up. This goes to infinity as R goes to zero, right? So it comes from the top, it goes to a minimum, and then it comes up again. This is how the potential energy, if there are electrostatic charges present, looks like. This is the potential energy as a function of distance between the two molecules, and the x-axis is r, which is essentially the distance between the two molecules. Okay, this is for a molecule. However, if you have just Okay, sir. billiard balls, as in Sir, particles which have no so charges, when is it neutral negative? particles. So the only force that they can apply on each other, there is no field, hence there is no potential. So जब भी वो एक दूसरे से दूर हैं, तब कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा. So, यानी कि पोटेंशियल इज जीरो जब तक आर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा. Sir, am I audible? स्पेसिफिक Hello. पॉइंट, इट्स द पॉइंट जब ये दोनों टकराते हैं एक दूसरे से, राइट? इस जैसे ही वो टकराएगा, उस पे इधर फोर्स लगेगी, इस पे इधर फोर्स लगेगी, एंड वो दोनों दूर चले जाएंगे. यानी कि अगर इस डिस्टेंस के अंदर आपको और अगर पास जाना है तो आप नहीं जा सकते, यानी कि इनफाइनाइट पोटेंशियल है. सो दैट्स व्हाई दिस इज एन देयर इज एन इनफाइनाइट पोटेंशियल हियर. जस्ट रिलीज दैट. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, sir. I was asking that कि इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होगी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी का ये नेगेटिव होने का, पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव होती है, when potential energy is less than zero, this implies that the system is in a bound state. What does that mean? It means that दो atoms थे, वो इतने पास आ गए कि वो दोनों बाउंड हो गए और एक मॉलिक्यूल बना दिया. सो नेगेटिव, जब भी नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो दोनों बाउंड होंगे एक दूसरे से. और वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है. जब फॉर एग्जाम्पल आपकी एनर्जी इतनी है, दिस इज लेट्स से माइनस यू नॉट, दिस इज द एनर्जी. सो इस एनर्जी पे देर आर टू डिस्टेंसेस दैट यू गेट, राइट? What are these two distances? Well, the first distance is the position of the first thing with respect to some coordinate frame. Let's call this R1 and let's call this R2. Uh, let's call this R2. So this is essentially R1 and this is essentially R2. So इन दोनों का माइनस ये जो डिस्टेंस है, दिस इज R1 minus R2 which is R. So essentially yeah, that so you know where these two particles are. एंड जब एनर्जी हम बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो खाली एक पॉइंट पे ही कट करेगा, राइट? दो पॉइंट पे कट नहीं करेगा. इसका ये मतलब है कि वो दोनों बाउंड नहीं है, वो दोनों अनबाउंड हो चुके हैं, एक बहुत दूर जा चुके हैं दूसरे से. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. लवली. तो यानी कि जब भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, उसका ये मतलब है सिस्टम बाउंडेड है, मॉलिक्यूल बना रखा है. और ये खाली मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लिए वैलिड नहीं है, ये कोई भी सिस्टम आप ले लो दुनिया में, वो सारे सिस्टम्स ऐसे ही काम करते हैं. जब भी नेगेटिव का मतलब बाउंड हो जाता है वो सिस्टम. सर एक और क्वेरी सर. यस. ये नेगेटिव के बाद थोड़ा मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं चेंज हो रहा है. व्हाई इज दैट? Why is this coming up again? या Well, it is essentially this function. If you plot this function, it's not exactly this function, because here what you need is R1 minus R2 का magnitude, right?
but this is in terms of this R. So you'll need to write this R1 minus R2 because both of these are vectors. These are both vectors quantities, right? So R1 minus R2 is essentially the square root of the distance between them. So you'll have to expand the whole thing and you'll get a complicated expression. जब उसको plot करोगे in terms of R आपको expression मिलेगा. जब आप उसको plot करोगे तो वो ऐसे ही दिखेगा. वो हमेशा ऐसे ही दिखता है. Even if I Google this for you, this is how essentially any potential energy looks like. Uh, Potential energy uh, between two atoms, not charges. Let's see images. Yes. So essentially, this is how it looks like. Do you see this? Yes, sir. सो इट गोज नेगेटिव. जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट क्योंकि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उसका मतलब ही वो होता है. एंड जैसे ही ऊपर जाते रहोगे सो इट्स बाउंडेड अंटिल अनलेस यू आर पॉजिटिव इट बिकम्स अनबाउंडेड. इसका यही मतलब है बस. इसमें एक और चीज आप इंटरेस्टिंगली देख सकते हो. अगर आप सॉरी ये मैं सर कहीं. किसी भी चीज की टेंडेंसी होती है टू बी इन द मोर स्टेबल स्टेट देन यस यस व्हाई अगेन वो क्या कहते हैं ऊपर ही आ रहा है वापस वो I mean, बिकॉज तुम उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो राइट. बट वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड. यार कहाँ रख दिया मैंने उसको. वेयर इज Zoom? Yeah, stop sharing, share again. Yes, okay. So your, sorry, what was the question again? the tendency of anything is to be in stable state then Yes. why हमको then ये why रियलाइज करना पड़ेगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है राइट. इसमें मेनी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्योंकि एटम के अंदर मेनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राइट. उसके वैलेंस जितने इलेक्ट्रॉन्स है एसेंशियली वो सारे यहाँ पे होंगे इन दोनों दोनों की. So, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड वो सारा पूरा प्रोसेस होता है. तो देयर आर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स और हमने फर्मीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता है. एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्टेट में नहीं रह सकते. अगर एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम स्टेट में है दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकता उसको ऊपर वाली स्टेट में ही जाना पड़ेगा राइट. तो ये सारी चीजें मिल के इसेंशली दिस दिस लेयर्स ऑफ सिस्टम बना सकते हैं. इसको अगर हम खाली इस पार्ट को मैग्नीफाई करें इट्स समथिंग लाइक दिस राइट. सो ग्राउंड स्टेट में है जो है उसके बाद फर्स्ट एनर्जी स्टेट यहाँ पे सेकंड एनर्जी स्टेट यहाँ पे थर्ड एनर्जी स्टेट यहाँ पे फोर्थ एनर्जी स्टेट यहाँ पे. सो पहले इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया. सो दैट इज हाउ इट गेट्स फिल्ड. और इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं एक्चुअली. इसमें भी हर एक लेवल आर डिवाइडेड इनटू मेनी डिफरेंट लेवल्स बिकॉज रोटेशन है और वाइब्रेशन है तो इसलिए इट्स कॉम्प्लिकेटेड. वी वोंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ये सारे आगे जाके आप पढ़ेंगे अगर आप फिजिक्स आगे कंटिन्यू करते हैं तो. ओके yes sir clear sir लवली. सो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग. क्या क्या किया हमने पिछली क्लास में बता सकता है कोई. from the very starting we started assuming that क्या क्या हो सकता है क्या क्या हो सकता है. yeah ground So motion and all we were talking about kinetic theory, right? Kinetic theory of gases, KTG. yeah First we talked about ideal gas, right? उसकी इक्वेशन उसकी प्रॉपर्टीज उसकी सारी चीजें. देन वी टुक द मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस एंड वी ड्राइव्ड द थ्री लॉस ऑफ isothermal which is essentially called the Boyle's law, right? For the isobaric we call it the Charles law, or is that Gay-Lussac's law? I always forget. I think this is Gay-Lussac's law. And Sir, it's Charles law. Isobaric is Charles law. isobaric is Charles law. Charles law. Okay, lovely. Thank you so much. Charles law. And this is Gay-Lussac's law. Okay, make sense. एंड उसके आगे हमने और क्या क्या किया था बताओ. ये लास्ट था A last था. So we derived everything. We also got pressure in terms of as a function of
the average kinetic energy, average velocity, right? And we got temperature in terms of average velocity also, and then we combined the two in order to get PV is equal to RT. वहाँ से भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड ओके हमने चार्ल्स लॉ और ये भी ड्राइव किया था ओके so let's move on. Two people are in the waiting room. Okay, just give me a second. Admit. Okay, lovely. Okay, so let's move on and let's try to drive more things out of whatever we have learned today. Um, let's talk about Avogadro's law. Somebody remember what Avogadro's law is? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. किसी को याद है? It talks about number of moles is directly proportional to Number of moles is directly proportional to what? वो याद नहीं है. I'm confused between. Yeah, but it actually, yes, it does talk about number of moles, but actually it is talking about the number of particles in one mole, right? So it states that equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal amount of molecules. कहने का क्या मतलब, अगर मैं वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर दो गैस का एग्जैक्टली सेम कर दूं, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे दोनों में. दैट इज व्हाट एवोगाड्रोस लॉ सेज. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. कोई इसको प्रूव करने की कोशिश कर सकता है अभी तक जो हमने किया है उसको यूज करके? ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. प्रेशर हमको क्या पता है क्या होता है? दैट्स जस्ट 1/3 रो एवरेज v स्क्वायर्ड, राइट? ये हमने पिछले क्लास में ड्राइव किया था. रो इज जस्ट मास अपॉन वॉल्यूम, एवरेज v स्क्वायर्ड. व्हाट इज मास? हमको इसमें करना क्या है? हमको इसमें अगर सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर है तो दो गैसेस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? वेल, मास, ये मास है, दिस इज अबाउट टोटल मास, राइट? और हमने इस मास को कहाँ से डिफाइन किया था? इसको mn डिफाइन किया था, वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ वन एटम, वन मॉलिक्यूल, एंड n is essentially just the number of molecules. Okay. So we have mn by 3v times average v squared. Remember, this is capital V and this is small v. Capital V is for volume and small v is for velocity. Okay, remember these things. These are important. Confused ho gaya warna. Okay, so first statement says pressure in the first gas should be equal to pressure in the second gas. What does this mean? Well, this means exactly the same thing as you would think. It means that 1/3 m1 n1 divided by v. Volume is also the same, times Sir, average. Huh? so in the expression of pressure, we should haven't we included the V in number density itself? नहीं, v is talking about the volume. नंबर जो N, sir. आएगा वो मास से आएगा, राइट? दिस इज द टोटल Sir, मास. sir, but yesterday pressure formula was 1/3 nm average velocity per square, where n is the number ये density. Yes, So n was the number of density, but if you divide n by v, that is what I called the number density here. तभी वहां से मैंने v हटा दिया था.
This n is just the number of molecules in total. सर No, sir, n खुद ही नंबर डेंसिटी नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हम वापस वॉल्यूम परिवर्तन करें तो डबल वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? सर I also asked the same thing yesterday. आपने बताया था कि rho equals m by v equals nm. N by v, that okay, so you can consider this number of per unit volume, but then your m will change, right? If see think about it logically. What is capital M? M is the total mass of this gas, right? Yes, no, maybe. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually we've used the same n for denoting the number density also and number of molecules also. Okay, so That's why let's it's just written use as it capital N. ठीक है? Yes, sir. ठीक है, इसको capital N बोल देते हैं. So total mass जो होगा वो अगर सबका mass same है, let's call it small m and total number capital N है, total mass तो m times capital M होना चाहिए, right? And वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे. So let's call it capital N. Yes sir. ठीक है. So this is m2 n2 v2 average square divided by v. 3 cancels, v cancels. What is remaining? What is remaining is m1 n1 average v1 squared is equal to m2 n2 average v2 squared. Correct? Yes sir. Yes, sir. Lovely. Now, what else do you know? Well, you know that the temperature is the same. If the temperature is the same, what does that mean? So kinetic energies will be same. Kinetic energy is the same. Exactly. And kinetic energy is for each molecule is also the same, right? So Lovely. Yes. So half m1 v1 average squared should be equal to half m2 v2 average squared. Correct? So now we have two of these equations. M1 ये cancel हो गया. This implies M1 V1 squared should be equal to M2 V2 squared. Now let's call this equation 1. Let's call this equation 2. And let's just divide the two equations. 1 divided by 2. Okay? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ? M1 कैंसिल हो जाएगा और V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? N1 बचेगा और राइट हैंड साइड पे M2 कैंसिल हो जाएगा और V2 एवरेज स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा क्या? N2. सो N1 शुड बी इक्वल टू N2. मेक सेंस? yes, sir. Yes sir. सो इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट. अगर मैं सब चीजें सेम कर दूं तो मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए. इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट एंड वेरी सिंपल टू प्रूव. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि प्रेशर सेम है तो इसलिए उसका रो टाइम्स एवरेज v स्क्वायर्ड भी सेम रहेगा एंड दूसरी चीज टेम्परेचर सेम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी. ओनली दीस टू थिंग्स इट डिपेंड्स ऑन. लवली. Now let's move on to another famous law that we I don't think we've talked about diffusion that much, but there's this law called Graham's law of diffusion. किसी को पता है क्या होता है? It says a very specific thing. It states that the rate of diffusion यानी कि अगर एक गैस है उसमें मैं फॉर एग्जांपल एक रूम है, एक कोने पे जाके मैं थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क देता हूँ. सो व्हाट इज द रेट एट विच दिस परफ्यूम का स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा. ओके. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Okay, what does this mean? Rate जो भी है, it is inversely proportional to the density of whatever gas we are using. Okay, this is what Graham's law of diffusion says. Let's try to prove this also. Let us consider two gases A, B. इन दोनों में दो अलग अलग डेंसिटीज है. मान लो ρ1 इसकी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी ρ2 है एंड इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कुछ v1 v2 अलग अलग है.
सो प्रेशर फर्स्ट केस में क्या होगा, ए गैस में 1/3 ρ1 v1 squared, right? And P2 will be 1/3 ρ2 v2 squared. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Now, diffusion. When does diffusion happen? अगर अगर मैं एक कमरे में अगर एक गैस थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दूं एक कोने में, why is it going everywhere? Why is it happening? It is happening because it wants to maintain the same pressure. एज इन एक अगर गैस में दूसरे गैस में क्या एक कमरे के अंदर बहुत बड़ा कमरा है तो इसलिए टोटल प्रेशर कभी चेंज नहीं हो रहा है मान लो, तो फिर इवन अगर चेंज भी हो रहा है तो अगर मैं एक कोने में थोड़ी सी गैस रिलीज करूंगा तो वो उसका प्रेशर उस पॉइंट पे कुछ और होगा, तो इसलिए वो चाहेगा वो स्प्रेड आउट हो जाए ताकि हर जगह प्रेशर एक सेम हो जाए और वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। करेक्ट? Yes, sir. Sir. तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इंप्लाइज आफ्टर सम टाइम what should happen? My P1 should be equal to P2. Correct? Yes, sir. Yes, sir. This implies 1/3 ρ1 v1 squared should be equal to 1/3 ρ2 v2 squared. Lovely. This implies 3 cancel कर दो, 3 इधर से cancel, 3 इधर से cancel. Implies v1 squared by v2 squared should be equal to ρ2 over ρ1. Okay. Okay. Is equal to ρ2 by ρ1. Lovely. Now, rate of diffusion. Okay. Rate of diffusion. Okay. ठीक है. So what would this imply? This implies that average 1 divided by average v2 should be equal to root ρ2 by ρ1. ये जो स्टेप है, is this true? Is this always true? No, sir. Yes, it is not Because it always is true. root But when will it be true? Yeah, if it is अगर बाहर से मतलब वो होगा स्क्वायर Yes, will then square. though it will be true, but when is it the case that v1 squared is equal to v1 squared? When is this true? जब कांस्टेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट सबका यस, नहीं देखो, चेंज किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इसकी वजह से हो रहा था अगर मासेस डिफरेंट हो, राइट? अगर एक ही गैस है और एक ही मॉलिक्यूल्स हैं, सबके मास सेम रहेगा। यस सर। तो इसलिए यानी कि जो एवरेज स्क्वायर्ड होगा, यू कैन जस्ट राइट इट एज द स्क्वायर्ड एवरेज को यू कैन जस्ट राइट इट एज एवरेज स्क्वायर्ड, and that is why we are able to do this, because the two gases are just two gases and they have the same masses. मतलब ए गैस का जितना भी मॉलिक्यूल का मास है वो पूरे गैस का सेम रहेगा, एंड बी मॉलिक्यूल का जितना गैस है उस सबका मास, हर मॉलिक्यूल का मास सेम रहेगा, बिकॉज इट्स द सेम मॉलिक्यूल. दैट इज द ओनली रीजन, एंड दैट इज व्हेन दिस इज पॉसिबल, when it has the same mass of each molecule. Okay. So once we are, what does this mean? Okay, we have shown this average of V1 divided by average of V2 is equal to ρ2 by ρ1. Now the law talks about the rate of diffusion. What does the rate of diffusion? Let's call it R. So what does rate of diffusion essentially depend on? The rate of diffusion will only depend on the average velocity, right? Average speed, average velocity. Because अगर ज्यादा velocity है तो वो ज्यादा जल्दी spread करेगा, सर द अगर कम प्रेशर velocity है तो वो धीरे धीरे spread करेगा. That is why R2 by R1 will just be equal to V1 average divided by V2 average, which is सर nothing. प्रेशर डिफरेंस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर डिफरेंस पे। Yes, but the pressure itself is dependent on average of V, right? तो हम ultimately ये बोल सकते हैं कि वो खाली average of V पे डिपेंड करेगा. गॉट इट सर। Lovely. So, so R1 and R2, R1 divided by R2 is equal to root of ρ2 by ρ1, which is essentially the statement. So we have proven it, because R is,
R1 is inversely proportional to the square root of rho 1 and R2 is inversely proportional to the square root of rho 2. Hence proved. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. आगे बढ़े? सर उससे नोट नहीं किया सर. Okay. Let me go back. Note आराम से. Yes. सर ये ग्राम्स लॉ में कोई कंडीशन से क्या टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होगा, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं? नहीं. It's just talking about diffusion. Diffusion में जरूरी नहीं है कि temperature, लेकिन after some time, yes, the temperature will be the same, and yes, the pressure will be the same. मतलब प्रेशर वाज़न्ट द टेम्परेचर सेम, सेम एंड में जाके सेम हुआ. जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर सेम हो. देयर कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन. यस, जरूरी नहीं है टेम्परेचर सेम हो, लेकिन प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर इज अबाउट जस्ट बैंगिंग इनटू ईच अदर, राइट? एंड अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है दोनों गैसेस के, तो ऑन एन एवरेज सब एक दूसरे पे करेंगे, एंड ऑन एन एवरेज इक्वल प्रेशर होना चाहिए दोनों का. So was the pressure same throughout or after some time? नो, आफ्टर सम टाइम. दिस इज हैपनिंग आफ्टर सम टाइम. Okay, sir. Yes, sir. तभी मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर सम टाइम. आराम से नोट कर लीजिए. If you are done, just tell me, okay? Sir, can you once re-explain that thing? Which thing? Root mean square equals square of mean. This thing? Yeah. Is this what you're talking about? Yes, sir. Okay. When is the average? When is the squared average equal to the average squared? See, what does squared average mean? Let's clear this, because this is an important point one should understand. What does an average mean? Average of V mean? Well, it means I collect all the V's, V1, V2, V3, and I add them up till Vn, jitna bhi molecules hai, Vn, capital N, divided by N, right? This is the average. What about average squared? This is equal to V1 square plus V2 square plus V3 square plus dot 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 plus Vn squared divided by N. Okay? Yes, sir. Divided by N. Yes. Okay. Yes. Okay. So essentially, what somebody else said was absolutely correct. Okay. So on an average, one can assume. So when will this be equal to this squared? Essentially, that is the question, right? इसका square का अबे यार ये क्या हुआ? हाँ, yes. इसका squared के equal कब होगा? This is also n squared, right? This is also n squared. तभी ये पूरा होगा. Okay. When are these two equal? When these two are equal, when V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to dot 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 is equal to Vn. That is the only condition when these two will be equal, right? Because if that's the true, let's call all of these some V. This becomes n times V by n whole squared. This becomes V squared. And what happens to the lower one? Well, the lower one becomes this is just an n. This is not n squared. This is n. I was right. What does this become? This becomes n times v squared divided by n. This cancels out. This was v squared. That's the only case when these two will be equal. Yes, sir. And all the velocity, all the individual velocities of the particle will be the same. I was wrong about the masses. Masses have no role to play here. Does that make sense? Yes, sir. Yes, sir. If you see it mathematically, it becomes obvious. ये दोनों कब इक्वल होंगे? तभी इक्वल होंगे जब सारे वेलोसिटी सेम. Otherwise you will get cross terms, right? जब तुम स्क्वायर करोगे
you will get all these terms correctly, absolutely, but then you will get additional terms like 2 times v1 v2, 2 times v1 v3, 2 times v1 v4 and everything else जो नीचे वाले उसमें नहीं है, वो कब कैंसिल आउट होंगे, वो तभी कैंसिल आउट होंगे जब सारी वेलोसिटी सेम होंगी. लवली. सर इससे एक और बात भी तो पता चलती है कि दैट द कंटेनर वी आर कीपिंग द गैस इन इज यूनिफॉर्म, मतलब इट कैन नॉट बी ऑफ एनी शेप बिकॉज फिर तो वेलोसिटी इसका सेम होना मुश्किल हो जाएगा ना. Yes, that does make sense. Yes. That is essentially what happens during diffusion. If you think about it, even in normal circumstances, this is exactly what happens during diffusion. Okay, let's move on to Dalton's law of partial pressure. याद है किसी को क्या होता है Dalton's law of partial pressure? ये तो पढ़ा होगा, ये तो डेफिनेटली पढ़ा है क्योंकि मैंने भी पढ़ा था ये. P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus Pn. Yes, lovely. So essentially, it is saying that the total pressure is the sum of the individual pressures of all the gases. So essentially saying that, okay, let's just write the whole statement down. It states, तो आपको याद करने के लिए भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे क्या होता है. It states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting is important, non-reacting gases, gases occupying a given volume, occupying a given volume, occupying a given volume is equal to the sum of the partial pressures which each gas would exert, which each gas would exert if it alone occupied the same volume at the same temperature. Okay, does that make sense? If there is a mixture of gases in a container, तो the total pressure होगा, वो अगर हर एक इंडिविजुअल गैस को लोगे और उसको और सेम वॉल्यूम और सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे उसका प्रेशर देखोगे हर एक गैस का, and if you add all of those pressures up, you'll get the total pressure. That is what essentially Dalton's law of partial pressure says. Let's try to prove this. Again, let's assume that there are n gases, n different kinds of gases. There are n gases. उन सबका masses जो होंगे वो m1, m2 डॉट 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 mn होंगे मान लो, और क्या number of particles, so n1 n2 डॉट 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 nn होंगे इसमें, and और क्या चीज डिफाइन करनी है, प्रेशर्स p1 p2 डॉट 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 pn होंगे. ओके, so what is p1? As was said, it's just m1 times n1 capital capital N1 divided by V multiplied by average V1 square. And what is P2? Well, that's just 1 by 3 m2 n2 by v2 squared ka average, and dot dot dot, we can do the same thing up till Pn. So 1 by 3 mn nn divided by V v2 squared, Vn squared. Okay,
Now, if you add all of these up, what do you get? This implies P1 plus P2 plus P3 plus dot 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 plus Pn. What do you get? 1 by 3 by V common आ जाएगा सब में, and what will remain is just what will remain is just m1 n1 average v1 squared plus m2 n2 average v2 squared plus dot 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 mn nn average vn squared. Okay, make sense? Yes, sir. Yes, no, maybe? Yes, 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 sir. sir. Lovely. एक मिनट में इसको जब मिटा दूं जरा ऊपर वाली चीजों को. सर वो आपने क्या लिखा है? Each gas would exert if it also occupies the same volume at the same temperature. Yes. मतलब अगर वो different volume occupy करे तब नहीं हो पाएगा सर? हाँ, ऑब्वियसली इफ यू चेंज द वॉल्यूम तो प्रेशर तो सेम नहीं रहेगा ना, प्रेशर भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा. नहीं, ये इंडिविजुअल गैसेस की वॉल्यूम की बात चल रही है ना सर? यस, तो इसेंशियली कह रहा है कि अगर इनिशियली लेट्स से देयर आर मल्टीपल गैसेस, उसमें मान लो अलग अलग तरीके के हैं, एक को मैं गोले से बोल रहा हूँ, दूसरे को स्क्वायर से बोल रहा हूँ, तीसरे को ट्रायंगल से बोल रहा हूँ, चौथे को स्टार से बोल रहा हूँ, ठीक है. Yes. Now it is saying that the total pressure will be equal to, अगर वही amount of gas है लेकिन खाली ये तीन है, प्लस सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम खाली ये दो हैं, प्लस सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम खाली ट्राइंगल है, प्लस सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम खाली स्टार है. ओके, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ना? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. यस, या कंटेनर की तो वॉल्यूम होगा, गैस में और किसका वॉल्यूम होगा? यस सर, यस सर. नहीं, एक्चुअली लाइन कंफ्यूज कर गई. See, if it's a gas, then gas does not have a well-defined volume in itself, right? It's not like a solid. यस सर. A gas will always occupy whatever container it is given in. Okay. Yes, so we have defined the total pressure here. Now, what else do we know about this initial mixture? Do we know something else? कोई बता सकता है? टेम्परेचर सेम है. Yes, temperature सारी गैस का सेम रहना चाहिए. क्यों? काइनेटिक बिकॉज कंटेनर में है सारी गैसेस, तो पूरे कंटेनर का टेम्परेचर होगा ना, एक का टेम्परेचर तो होगा नहीं, पूरे टेम्परेचर का टेम्परेचर होगा एंड सबका सेम ही रहेगा टेम्परेचर. So Yes. what should it be? 1 by 2 m1 average v1 squared should be equal to 1 by 2 m2 average v2 squared should be equal to dot 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 should be equal to 1 by 2 mn vn squared. Okay, what does this mean? Well, this means that सारे 2 हटा दो, m1 v1 squared should be equal to m2 v2 squared, which should be equal to dot 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 should be equal to mn vn squared. Okay, so this sum, if you see, अगर ये मैं कह रहा हूँ m1 into v1 square is equal to m2 into v2 square is equal to m3 into vn square, तो इन सबको मैं कुछ सारी इक्वल हैं, इसको कुछ मैं m v squared बोल देता हूँ. ओके, क्योंकि सारी इक्वल हैं तो v square है मान लो इसको. So what does this mean? This means that total sum of the pressures plus dot 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 plus Pn should be equal to 1 by 3 times m times average v squared multiplied by n1 plus n2 plus dot 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 nn. Correct? Yes sir. Lovely. Now, if you just add the number of molecules together, what do you get? You get a total number of molecules, right? Yes sir. So let's call this the total number of molecules, capital N. So 1 by 3 m v squared multiplied by capital N. Well, this is just the pressure of the total thing, isn't it? Because m times capital N is just the total mass. And there is a divide by v, which I forgot, obviously. Yes. And yes, so this is m times n is just the total mass. So these two become the total mass. And this is just the formula for the pressure, the total pressure. Make sense? Yes sir. And Yeah. hence,
Okay. Take some time to copy this. Take some time to comprehend this. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, just ask. Sir, so like are the kinetic energy is equal? Like Why we is the have kinetic written, energy equal? so we have written right half m1 v1 square. The Because the kinetic energy is temperatures equal. are equal. Okay, sir. Why are the temperatures equal? Because they're in the same container. Because they're in the same container. Lovely. So you can prove these things just by going back and assuming that everything is just made of these balls, which actually don't even hit each other. Sorry, just hit each other and bounce back. There is no complicated electromagnetism. There is no dipole interaction. There is no potentials that you need to worry about. It's just coming and hitting and going away. It's just a straight potential, just straight and zero, straight and infinite and zero. It's just that kind of a potential. It's a very, very simple potential. But still, you can prove so many laws that are specific to gases and specific to things just by assuming this simple toy model. Remember, this ideal gas was a toy model. It wasn't a real gas. It was a toy model. So we're using that toy model and we still get all these laws just from the toy model. Yes, sir. Lovely. Sir, I have a question. Yes, go ahead. सर हम स्टार्टिंग से ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अगर कोई एक वॉल है जहाँ पर कोई पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं तो हाँ. उस पे जो टोटल फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो सारे मॉलिक्यूल्स ने जो फोर्स एक्सर्ट करा है उनका सम है. Okay. Yes, you can think of it like that. Then what do you do? So to total force equals to F1 plus F2 plus F3 and so on. Thus pressure equals to F1 by plus F2 by where pressure 1 is equal to F1 by and then we'll add them and then total pressure is P1 plus P2 plus P3 and so on. But that is not true, right? Because that assumes कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक ही टाइम पे फोर्स लगा रहे हैं उस पे. बट ऐसा नहीं हो रहा, राइट? कभी पहले एक आके टकरा रहा है, फिर वो थोड़ी दूर जा रहा है. जब से वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसके बीच में उसको कोई फोर्स नहीं लग रही है. फिर वो यहाँ पे जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आके टकराता है उससे, फिर वो उड़ते हुए जाता है. तो खाली थोड़े से टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रही है. सो टोटल फोर्स ऐसे लेके नहीं कर सकते तुम. समझे? Yes, sir. Okay. So all the see even when you're thinking about Newton's law, whenever you're thinking about Newton's law, you're calculating total force at a particular time. That is inherent in the statement. Just when you're calculating the total force, अगर ball है, sorry, एक block है, वो एक उस पे क्या कहते हैं उसको, पुली पे टंगा हुआ है. So all the forces are at a single point, a time. कि इस टाइम पे कितनी फोर्सेस लग रही है, इस पे mg लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है, इस पे और एक्सेलरेशन हो रहा है. So it's just at all forces at one moment in time. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे अलग ये पहले एक फोर्स लगा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा फोर्स लगा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा फोर्स लगा रहा है. That's why you cannot do this. चलो let's move on थोड़ा सा और आगे. Actually थोड़ा सा नहीं, काफी आगे. We'll talk about something very, very interesting, which is called the Maxwell's speed distribution. Now, what is this all about? Well, Maxwell in the late 1800s, late 19th century, he realized a very, very important thing. He realized that if there's a container, let's call this container A, it has some gases. He realized that since all of these molecules have different speeds, इस speed v1 है, इस speed v2 है, इस speed v3 है, इस direction में और उस direction में. So, can one write a distribution of these of the speeds of these gases? When one talks about a distribution, what do they mean? They're essentially trying to make a graph where on the x-axis, if for example in this case you have speed, so v, and on the y-axis you have the number of molecules with speed v.
तो इस यानी कि जीरो, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एग्जैक्टली जीरो स्पीड होगी एट सम टेम्परेचर, लेट्स से टेम्परेचर इज 300 केल्विन, कितने होंगे ऐसे? Almost zero, right? There will be almost zero, and then it will increase, it will increase, it will increase, and एक कुछ एक कोई पॉइंट आएगा, एक कोई स्पीड का एवरेज वैल्यू आएगी जहां पे ये मैक्सिमम पहुंचेगा। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी स्पीड इससे ज्यादा है वो कम होगी, एंड इट विल गो ऑफ टू इंफिनिटी। This is what the Maxwell speed distribution looks like. And what equation is it given by? Well, the equation that it's talking about is dnv, which is essentially number of molecules with speed within at speed v within a range dv. Okay, within a range dv, इस range में कितने molecules हैं, that is essentially what it is collecting, and this is given by slightly complicated formula, 4 pi n a cube e to the power minus b v square times v square dv, where a is given by square root of m by 2 pi kbt. Kb is Boltzmann constant, right? B is equal to m by 2 kbt. Sir, what is KB? Kb is Boltzmann constant. And so what is Boltzmann constant? Oh, lovely, 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 lovely. You remember how we talked about the gas constant? Yes, sir. What does the gas constant mean? See, gas constant is nothing but if you just go back to your PV is equal to RT, यहाँ से what is R? nRT, sorry. What is R? It is PV divided by NT, correct? Yes, sir. This is what your R is. So it's these three things: pressure, volume, and temperature per number of moles. Now, if you want to convert this from number of moles to just the number of particles, what do you need to do? Will multiply by that Avogadro number. You multiply it by The Avogadro number. the 6. Avogadro's number. Absolutely. So you will have Na times what? Na is the Avogadro number. Yes. N. So you will substitute N as what? N is the number of moles. Number Sorry, of, Na times N. Na times N. huh? Na times N. Na times N. That will, so essentially you're changing, that will be Avogadro's times the number of moles. That makes no sense. No, I mean, like if N is 3 moles, Huh. so we'll have 3 into Na. 3 into Na number of molecules. That is absolutely correct. Okay. Okay. So let's multiply and divide by Na. Let's do this. Then the equation doesn't change, right? You're just multiplying and dividing. Na times the number of moles. This is just the total number of molecules. Yes, sir. So that is essentially what you said. And then let's take this Na and इसको नीचे ले जाते हैं. So this becomes R by Na is equal to PV by total number times T. This factor, R by Na, is essentially the Boltzmann constant. Okay? And this is essentially a very, very important constant. So can it be said that it tells about the distribution of the constant per particle? Not really. Boltzmann constant tells you a very, very important thing. First of all, what are the units of the Boltzmann constant? कोई बता सकता है? Yeah, it will be the same as this. A per mole आ जाएगा एक extra. Yes. Kilojoule. So essentially it's joules per Kelvin, right? Yes, sir. It is joule per Kelvin. Now, this Boltzmann constant essentially is telling you a very, very important thing. Boltzmann constant is telling you how much temperature you need in order to change the energy. It's energy per unit temperature. इसका units जो है. That is the reason why it's one of the most important
constants in the universe. It is exactly at the same level of the speed of light. It is exactly at the same level electromagnetic जो k लिखते हो आप 1/4 pi epsilon naught, so epsilon naught, it's essentially at the same level of importance, kb. And one more thing, since R जो था, it was dependent on the number of moles. Now, when you're talking about fundamental physics, you're not really measuring, you're talking about particles, right? You're talking about molecules. You're not really measuring things in number of moles. You're doing that in chemistry. So in physics, you'll always use Kb rather than R. In chemistry, you will use R because you're dealing with more number of molecules. So it's a way more complicated system, and hence you'll have to use R. But when you're talking about one particle, two molecules, 10 molecules, 100 molecules even, you'll start using Kb, because then, since this is just the number of molecules here, things become very easy. So what is PV is equal to nRT in Boltzmann constant? It's just PV is equal to nKT. So nR becomes nk. Okay, make sense? Yes, sir. Lovely. So you said something about the speed of light. What was that? I was saying that the Boltzmann constant is as important as the speed of light. In the sense, As the a speed of light is the limit which um, you cannot travel faster than that. And similarly, Boltzmann constant is a very, very important constant in nature. It tells you about how much energy you need if you want to increase your temperature by 1 degree Kelvin, let's say. It's just saying that it's nothing important, nothing about the speed of light that I said. Okay, so let's remove this all. Yes, sir. sir, just a second, sir, please, sir. Sir. Go ahead. So what is this D and V? Like it is like the number DNV. of particles at the point. At that point. No, wait, just give me a second. This DNV, this talks about the number of particles in a range from V to V plus dV. इस रेंज में कितने पार्टिकल्स आएंगे? Okay, sir. What you're talking So about, number of particles with velocity v, let's call this small n v, right? This is essentially this, right? And this is also small v. ये सारे small v हैं, इसमें capital V कुछ नहीं है, ये सारे small v हैं, सारे speeds हैं इसमें. This thing is essentially nv. So this thing is essentially telling you how many particles are there at this velocity. ये जो अंदर की चीज है. So you can write this as nv times dv. okay, sir. Yeah, I'll just do all of this. Boltzmann constant, Boltzmann constant. Sir, this graph, you did not join that curve with the x-axis. That Yes, means yes, yes. It goes to infinity, and infinity पे जाके it never touches. So essentially, that is the point. Even if there is a random gas, there can be one. There can be one particle. molecule with arbitrarily large speed. It can be as close to the speed of light, and the temperature won't be as much. There is a probability that a particle does have that much speed. Just true. And is there a probability that there's a molecule with no speed at all? With no speed at all, it's almost zero. So to go to zero speed, for a molecule to reach zero speed, what does it mean? It means that the temperature is zero, right? And the temperature can never be zero. Okay, it will either be all the gas molecules or See, all the gas molecules will be moving and will have some speed. एंड वो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड पे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड पे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड पे हैं, वो इस ग्राफ से पता चलेगा आपको. दिस इज व्हाट बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज टॉकिंग अबाउट. okay, sir. मेक सेंस? Yes, sir. ओके, लवली. Sir, So, M is the total mass over there. huh? M is the total mass. M is this thing, this M. Yes, sir. Yes, M is not the total mass. M is the mass of one molecule. We are assuming that all molecules have the same mass. Okay. Yes, sir. Now,
From this distribution, this given distribution, we can talk about some things. Let's first talk about the speed which is most probable, the most probable speed. What does this mean? This means that the number of particles which are traveling at the highest speed, right? Yes, no, maybe. So at the highest speed or the maximum Sorry, number of sorry, sorry, particles? sorry. At the speed at which the number is maximum. So essentially at this point, not the Yes. highest speed. High speed will be infinity. Um, yes. Yes, sir. Yes, sir. So at the speed which essentially is the maximum number of particles we are traveling at that speed. What is this speed? How do you calculate this? Any ideas? So कैसे calculate किया जाए? It is probably Huh? the mean of all the velocities. The mean of all the velocities. Yeah, yeah. I mean average. The average. Okay, let's calculate. First, let's calculate the most probable. See, first of all, we realize that ये जो भी ग्राफ है, ये जो पॉइंट होगा, ये इसका मैक्सिमम होगा, राइट? जब मैक्सिमम और मिनिमम होता है, तो क्या होता है? उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, राइट? Yes, no, maybe. Yes, sir. Yes, sir. Lovely. So x-axis, y-axis क्या है? Small nv. It's essentially this inner thing. So let's figure out what small nv by m not equal to. This is not equal to. So vmp हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. So this will be the speed such that dnv by dv should be equal to zero. So what is that speed when this happens? Well, let's just take the अंदर वाली चीजें. We have 4 pi n a cube and let's differentiate d by dv v square e to the power minus b v square. What is the derivative of this? कोई बता सकता है? We'll do a lot of integration and differentiation now. So tell me, what is the derivative of this? Tell me. Okay, how do you take a derivative of this? Let's say this is a into b. Chain rule, you do the derivative of this and then plus you do the derivative of the second one, right? पहले वाले का क्या derivative है? It's just 2v e to the power Yes. minus b v square. दूसरे वाले का क्या derivative है? पहला वाला ऐसे ही लिखो. It's just e to the power minus b v squared multiplied by minus 2bv. Correct? Yes, sir. Chain Yes. rule. Yes, sir. चेन रूल इसका अंदर वाला लगा है. नाउ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. यानी कि ये सारी चीजें को हटा सकते हो तुम. एक v यहाँ से हटा सकते हो, e टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर हटा सकते हो, 2 हटा सकते हो, और क्या हटा सकते हो? और कुछ नहीं हटा सकते. दिस इम्प्लाइज यू गेट 1. यहाँ पे सब कुछ कट गया है. प्लस प्लस और माइनस, इट विल बी अ माइनस बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन हियर. माइनस BV. 2 भी कट गया है, बी वी स्क्वायर is equal to 0. This implies v square is equal to 1 by b. This implies v is equal to 1 by square root of b, which is equal to what? This is v most probable, right? V most probable. 1 by square root of b. b क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमको. Yes. And so this is square root of 2 kbt by m. So essentially in this distribution, what speed is this v? Maximum wali speed? This is just square root of 2 kb t by m. This is the most probable speed. Now let's go So ahead what and is calculate the VMP? average speed. Like, Huh? sir, Yes. what was VMP? What was VMP? VNP is the most probable speed, right? Okay, so sir, can you just again show the differentiation? Like how Differentiation you between what? the in the previous slide you just differentiated that equation, right? Just can you show it again? Oh, differentiate. Oh, okay, okay, okay. The derivative. Just go. Let me go back. Yes, here. So this Sir, is the. आपने वो derivative zero के बारे में क्या बोला? Please can you repeat that? See, maximum minimum की बात है, right? So एक कर्व है, ठीक है? ये कोई कर्व है. इसका मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है? इसका मैक्सिमम इस पॉइंट पे आ रहा है, राइट?
मैक्सिमम और मिनिमम होने का क्या मतलब है? कोई भी मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, उसका ये मतलब है अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो उसका स्लोप जीरो होना चाहिए, राइट? यस सर। स्लोप टेंजेंट का स्लोप जीरो होने का क्या मतलब है? इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, बिकॉज स्लोप जो होता है इट इज जस्ट द डेरिवेटिव, राइट? इट्स जस्ट y अपॉन x। अगर उसको छोटा करते जाओगे तो इट्स dy अपॉन dx। यस सर, So गॉट इट सर। if that is zero, then you have checked कि there is either a maxima or a minima. You still don't know whether it is a maxima or a minima. How do you know whether it's a maxima or minima? You take the second derivative, you put it in. If you get a positive quantity, it's a minima. If you get a negative quantity, it's a maximum. That's just how you do minimum maximum. आप लोग ने अभी तक मिनिमम मैक्सिमम किया नहीं है क्या क्लास में? मैथ्स में नहीं किया आप लोग ने? जानने के लिए, मतलब मेरे अपने जानने के लिए खाली। नो सर। हाँ ओके, अच्छा ठीक है। नाउ यू नो हाउ टू डू दिस। ओके, सर प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। डेरिवेटिव देखना है ना तुमको? यस सर। सो एसेंशियली तुम डेरिवेटिव किसका ले रहे हो? वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले रहे हो, राइट? पहले तुम इसका डेरिवेटिव लोगे फिर इसका डेरिवेटिव लोगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इट्स टू वी टाइम्स, दूसरी चीज वापस लिख दो, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वेल एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। पहले एक मिनट, वी स्क्वायर लिख दो, वी स्क्वायर ये वाला वी स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, सो उसको ऐसे ही लिखो। एंड माइनस बी वी स्क्वायर का, अब चेन रूल यूज करके माइनस बी वी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तुमको, सो माइनस टू बी वी, दैट इज ऑल वी हैव डन। सर एक बार दिखा दीजिए प्रीवियस स्लाइड। ओके, यस हियर वी आर। सर हमें 1 - bv² कैसे मिला? 1 - बी, bv²। ये लो इस, और इसमें चीजें कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे जीरो है ना, इज इक्वल टू जीरो। जस्ट डू दिस योरसेल्फ, राइट दिस डाउन एंड ट्राई टू कैंसिल एवरीथिंग, एंड यू विल रियलाइज कि देखो पहली वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी तो इसलिए वन बचेगा। दूसरी टाइप वाली वर्ड उसमें एक माइनस साइन यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, एक भी यहाँ से आ रहा है, दूसरा भी यहाँ से आ रहा है, so that's why you get minus bv squared. Makes sense? Yes, no, maybe. यस सर। Sir, what is B? What is b? B is given to be this, no? B is m by 2 kt, and a is square root of m by 2 pi kt. So they're the gas constants that. Uh, Not really. No. They're not gas constants. They are other constants. Actually, they're not really constants. Also, they're dependent on temperature. So for the same temperature, this will be a constant. But if you change the temperature, this distribution will change. And it is a homework for you to understand if you how you change temperature. इसको plot करके देखो. Plotting software तुमको online मिल जाएगा. ये function लो, 4 pi n a cube ये वाला लो function, और इसको plot करो v की terms में, और बी की वैल्यू और ए की वैल्यू ये डाल दो, और इसमें टेम्परेचर चेंज कर करके देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज कर रहा है। आई विल टॉक अबाउट Sir, this we're studying ideal gas or some. यस, वी आर अज्यूमिंग एन आइडियल गैस, यस। बट टू बी ऑनेस्ट, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर और लेस वैलिड इवन फॉर रियल गैसेस। उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, थोड़े से चेंजेस जो आएंगे आपके वो ए और बी में आएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके okay?
सर go ahead. सर डिफरेंशिएशन में जब v क्यूब आया था v को कॉमन इसलिए लिया, जीरो का वैल्यू इसलिए पुट नहीं की क्योंकि v जीरो नहीं हो सकता, ये है। No, you have to put it 0 because you're saying that this is a maximum, right? नहीं, वेलोसिटी सर जो वहां से भी डिफरेंशिएशन करके दो टर्म्स में किसी में एक वेलोसिटी और दूसरे में v क्यूब आया था ना, वहां से सर, और आपने 1 माइनस टू वी स्क्वायर लिख लिया और दूसरे वेलोसिटी का जीरो नहीं हो सकता इसलिए नहीं लेंगे No, wait, what cannot be 0? सर। वो डिफरेंशिएशन किया ना आपने, This thing. हाँ जी, उसमें टू वी ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर और माइनस टू बी वी क्यूब आया था, एक वी इधर से दूसरा वी क्यूब माइनस यहाँ, टू बीवी क्यूब आया, हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो वी यहाँ पे 1 माइनस टू वी बी वी स्क्वायर है ना, और वहां से एक वी आपने कॉमन लेके जीरो के साथ इक्वेट नहीं Yes, I किया mean, so क्योंकि I cancelled वेलोसिटी it जीरो out. I नहीं हो divided both sides by सकता। v, essentially. That is why I'm cancelling out the v's, no? There is a v here also, no? Which cancels out with this one v. And this minus bv squared cancels out with this, and this 2 cancels out with this 2. बचा क्या? एक b बचा यहाँ पे, और एक v स्क्वायर बचा, और एक माइनस साइन बचा, which is here. And इधर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, तो इधर. Make sense? हाँ यस सर। Okay, lovely. Let's move ahead and try to calculate the average speed. So average v हमको निकालना है. Average v क्या है? हम सारे v को सम करो और डिवाइड बाय n करो. लेकिन सर हमको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पता है. We know what the distribution is like. Distribution is like this. This will go to 0, but okay. This is nv, small nv, and on the y-axis you have v. So average v क्या होगा? Well, it will just be integral v dnv, small nv, divided by integral dnv, d small nv, from 0 to infinity, from 0 to infinity. Right? Does this make sense? Yes, no, maybe? सर प्लीज कैन यू रिपीट दिस वन? See, this is essentially how you take averages. अगर मैं एवरेज किसी क्वांटिटी ए का ले रहा हूँ इस डिस्ट्रीब्यूशन पे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे, so it is essentially a times dx. एक अगर मैं x पे डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, let's say कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा ऐसे अजीब सा करके, ये x एक्सिस है और ये नंबर वाला एक्सिस है, let's call it small n. So this average quantity is essentially the weighted average. What essentially you're doing here, when you're doing this, you're essentially adding all the a's, right? A at x1 plus a at x2, because it's continuous, you're integrating. That is essentially what you're doing. यस सर. Divided by the total number will just be 0 to infinity dn, sorry, dx. That is essentially an average. This is how you define averages. Okay, now let's. Who wants to do this integral? This is going to be hilarious. Okay, integral क्या है? इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. ये integral क्या है? 0 to infinity. First integral कर रहे हैं हम. V d nv. nv क्या दिया हुआ था हमको? हमको nv दिया हुआ था 4 pi capital N a cube e to the power minus b v square times v square. चलो, take a d here, put it in and solve it. Do it. You get dnv is equal to 4 pi n a cube multiplied by a huge thing times dv. यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा जो हम पहले ही निकाल चुके हैं. Then you put it back and then you integrate this. Through this process of integration, ये आप कर सकते हो. ये आपके सिलेबस में नहीं है essentially इसको ड्राइव करना. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू ड्राइव इट इफ यू वांट टू. ये आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं, लिटरली डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं. एंड इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 8 kt डिवाइड बाय पाई m.
मोस्ट प्रोबेबल जो यहाँ पे था उसका क्या आ रहा था, वी मोस्ट प्रोबेबल इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ kt by 2m, राइट? Eight, यस, 2 नो, मेरी kbt by सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? it was 2 kbt. सर वो 2 टू kbt. ऊपर है, यस 2 kbt। नाउ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाई पाई है। Now 8 by pi is 8 by 3.14, which is essentially more than 2, right? So जो मीन होगी वो एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होगी, वो यहाँ पे कहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ मीन, मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो सेंटर में नहीं हो, वो एक्चुअली ये सेंटर भी नहीं है, ये थोड़ा और शिफ्टेड होगा इधर से। एंड सिमिलरली यू कैन गो हेड एंड कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड। What is the RMS speed? VRMS, sorry, VRMS is given by the square root of the average, नाम पढ़ो, root, पहले root आया, mean लिया, square लिखा, of V, okay? So this would essentially be the square root of integral 0 to infinity V square dnv डिवाइड बाय इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dnv। और जब आप ये इंटीग्रल पूरा सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 kbt बाय m। So this is the thing that we have been using from yesterday, right? फ्रॉम, यही चीज कल से जो हम यूज कर रहे हैं. यस, एसेंशियली vrms, रूट मीन स्क्वायर, यस। सर सो सर एवरेज स्पीड का आंसर क्या था, फाइनल आंसर? यस, एवरेज स्पीड का फाइनल आंसर क्या था? हाँ, अब मैं सारे आंसर्स फिर से लिख रहा हूँ एक सेकंड। वी एवरेज was square root of 8 by pi times kbt by m, and v most probable was square root of 2 kbt by m, और यहाँ पे 3 है। so सबसे ये वाला तो हमको पता है, वो सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे v most probable होगा। उसके बाद आपका एवरेज भी आएगा, बिकॉज 8 by pi is smaller than 3 and greater than 2, right? सो उसके बाद आएगा ये वाला वी आर एम वी एवरेज, एंड उसके बाद आएगा वी आर एम एस। सो यहाँ पे स्मॉल एन वी और यहाँ पे वी। सो तीनों एक्चुअली जो वैल्यूज है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आर एम एस स्पीड, तीनों की वैल्यूज अलग अलग है। Now it depends on whatever you're asked. In some questions you will be asked the RMS speed, in some questions you will be asked the average speed, and in some questions you will be asked the most probable speed. So be prepared for such questions and answers. You can do some questions on this, but actually time नहीं है तो भी question ही कर लेते हैं। Degrees of freedom we'll do next time. आज जो भी पढ़ा है उसमें कोई question? नो सर। सर वो आपने डेरिवेटिव कैसे लिया सर, वो e to the power minus bv square? How do you take a derivative of e to the power minus bv square? D by dv e to the power minus bv square, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पहले पूरी टर्म को चेन रूल, राइट? लेट्स से a to the power x का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ d by dx, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? That will be x x x क्यों होगा? x minus 1. सॉरी, e to the power, चलो e to the power x का क्या होता है डेरिवेटिव? x e e to the power x का e e e it's e to the power x again. e to the power x का पॉइंट ये है कि उसका डेरिवेटिव e to the power x होता है, हाँ यस सर. राइट? तो यानी e अगर कुछ भी पावर है, कोई फंक्शन ऑफ x है, d by dx में कर रहा हूँ, सो इट विल जस्ट e to the power f of x मल्टीप्लाइड, चेन रूल, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है ना, मल्टीप्लाइड बाय d by dx of f of x। मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, पहले इसका डेरिवेटिव, पूरे का डेरिवेटिव लिया, वो सेम ही रहा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसका क्या आया, -2bv। दैट इज ऑल आई एम डूइंग।
Make sense? Yes, sir. Lovely. Okay, let's uh, yes. Let's move on to some questions. Okay. Okay, let's do this. If three gas molecules have velocity of 0.5 comma 1 comma 2 kilometer per second respectively, comma, calculate the ratio of their root mean square RMS, uh, root mean square speed and average speed. So is the 0.1? It's 0.5. तीन अलग अलग काइंड ऑफ गैसेस हैं और उन सब एक जो तीन अलग गैसेस हैं उसमें हर एक गैस में जितनी भी स्पीड है वो सबका सेम ही है। पहली गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड 0.5 है, दूसरे गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड 1 है, तीसरे मॉलिक्यूल के सारे गैस का स्पीड 2 है। यू नीड टू कैलकुलेट वी आरएमएस एंड एवरेज वी। You should not take that long, इतना मुश्किल नहीं है सॉल्व। पहले का रूट मीन स्क्वायर लेना है, दूसरे का खाली एवरेज लेना है। Done, sir. Yes, 1.32 divided by 1.17. Close enough. Yes, I think that's absolutely right. Yes, close enough. Okay, let's do this. तीन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वी आर एम एस कैसे निकालेंगे? Well, it will be the square root of the average of the square. Average square कैसे करेंगे? 0.5 square plus 1 square plus 2 square divided by 3. This is the average squared. So this is square root of 0.5 square, which is 0.25, plus 1 square, which is 1, plus 2 square, which is 4, divided by 3, which is square root of 455.25 divided by 3. क्या कट रहा है? 5, 6, 10, 12. Yes, कट रहा है 122.7 times 15, 5, which is square root of 1.75. Square root of 1.75 कितना है? It's 1.32 approximately. This is kilometers per second. And average speed, the average is just the average, which is 0.5 plus 1 plus 2 divided by 3, which is again 5.25 divided by oh sorry, not 5.25, it's 2 plus 1, 3.5, sorry, 3.5 divided by 3, which looks like 1.16666 kilometer per second, which is 1.17 approximately kilometers per second. And so the ratio is VRMS divided by average V is nothing but 1.32 divided by 1.17, which looks like 1.13. Make sense? Yes, sir. Lovely. Okay, let's move on to the next Can you question. show the previous slide? Huh? Can you show the previous slide? This one? Yes, sir.
Yeah, okay, sir. Okay, lovely. Let's clear all. Okay, do this question. Calculate the temperature at which the RMS velocity, so VRMS, of a gas molecule is double its value. Is double its value at 27 degrees Celsius. Pressure is constant. Yes, go ahead. Calculate temperature at which VRMS of a gas molecule is double its value at 27 degrees Celsius. So 27 degrees Celsius पे जो VRMS है उसका डबल किस टेम्परेचर पे होगा? Not that difficult. ओके सॉल्यूशंस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस में केल्विन 1200 60 डिग्री सेल्सियस हर्षित कैन यू टेल मी क्या किया आपने सर पहले VRMS ये जो फॉर्मूला ओके VRMS इज गिवन बाय व्हाट root 3 kBT by m. रूट 3 यस kBT बाय m mm. ठीक है टेम्परेचर इनिशियली क्या दिया हुआ है ये 27 डिग्री सेल्सियस which is 300 Kelvin, right? Yep. T फाइनल निकालना है हमको ये VRMS 1 है सॉरी सर मेरा वो जो मैंने आंसर दिया ना वो केल्विन में होगा यस आई नो क्या किया आपने नहीं सर VRMS 2 जो है वो ट्वाइस ऑफ VRMS 1 होना चाहिए राइट यस सर ये kb by m को कांस्टेंट which is 2 3 times kb T final divided by m oh sorry T initial आपकी खाली वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे whereas this is essentially 3 kb T final by m is equal to 2 times square root of 3 kb T initial by m cancels 3b cancels so this implies square so tf is equal to squaring both sides I get 4 t initial है 300 Kelvin so 4 times 300 is what 1200 Kelvin. Lovely make sense Yes, sir. very good okay just 4 minutes left should I go on to the next question चलो कर लेते हैं कोई बात नहीं थोड़ा लंबा हो जाएगा आई एम रिमूविंग दिस ओके जल्दी से okay this is exactly the same question so I want do this okay estimate the temperature at which oxygen molecule O2 will have the same RMS velocity
as hydrogen molecule at 150 degrees Celsius. 150 degrees Celsius. Molecular weight of oxygen is given to be 32 of oxygen, and molecular weight of hydrogen is given to be 2. Yes. Go ahead. हमारा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है. $3,768. Okay, somebody got the answer. So, okay, 1 minute बचा है, so let me just tell you how to do this. VRMS of oxygen कहना चाह रहा है will have the same RMS at 20 degrees Celsius. Should be equal to VRMS of hydrogen. Lovely. So VRMS of oxygen is given by square root of 3 kb temperature of the oxygen divided by the mass of the oxygen should be equal to 3 kBt temperature of the hydrogen divided by mass of the hydrogen, right? 3 kb 3 kb cut गया, square root has square root, squaring both sides, what do you get? Get T of oxygen divided by m of oxygen is equal to temperature of hydrogen divided by mass of hydrogen. Temperature of oxygen निकालना है, temperature of hydrogen दिया हुआ है is to be 150, temperature of hydrogen is going to be 150 degrees Celsius, which is how much Kelvin? 273 plus 150, which is 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 423 Kelvin. This implies T of oxygen is 423 divided by mass of hydrogen is 2 multiplied by mass of oxygen is 32, 16. So 423 multiplied by 16, which is what? 423 into 16, 6, 1, 6, 12, 18, 6, 1, 6, 12, 13, 6, 12, 18, 4, 24, 25, 423, 8, 6, 7, 6. So you get 6, 7, 6, 8 Kelvin. Make sense? Yes, sir. Lovely. Chalo, let's meet tomorrow, and tomorrow we'll try to almost finish this chapter. कल नहीं तो परसों की क्लास में हो जाएगा सब कुछ, मतलब परसों नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास में हो जाएगा सब कुछ.